long run Phillips curve is concerned, this difference between original Phillips curve, which is basically shortened, known as later on known as short-run Phillips curve, and long run Phillips curve. This differentiation between these two curves basically has started emerging during 1960s. In 1960s, में emerge होना शुरू हुई. Before that, the original Phillips curve has not been called as short-run Phillips curve. It basically has represented that this type of a stable inverse relationship between rate of unemployment and rate of inflation exists, right? But since the end of 1960s, the Phillips curve in the USA and specifically in USA has been found to be shifting upwards. That means it wasn't stable. ये stable नहीं था. There was a problem of shifting in that. This shows that stable trade-off between unemployment rate and inflation rate no longer exists, and the simple Phillips curve or the original Phillips curve is not generally true. ये true नहीं है, right? Now, and it is if it is true, it is only true for the short duration only. इस short duration के लिए ही true है. Many explanation of the shift of Phillips curve has been given by the economist, right? Now it has been said, first reason which has been given for the shift in the Phillips curve is the influence of rising cost of living on wages, right? That means Phillips curve has shown that there is wage inflation exist करता है, which results into price inflation, जो price inflation create करता है. This basically has been shown by the original Phillips curve or simple Phillips curve. But the impact, no doubt, there's the impact of wage inflation on price inflation, but on the other hand, price inflation also affects the wage inflation. Price inflation भी wages को affect करती है. So that means because of rise in prices, there is increase in the cost of living, and this increased rising cost of living has an effect on wages. Wages को affect करता है. This was the first explanation, because Phillips curve keeps on shifting because there is an influence of rising cost of living on wages. This was the first explanation which was given regarding the shift in the Phillips curve. Second explanation was given by Friedman and Phillips. इसको Friedman Phillips model भी कहते हैं. तो second explanation was given by Friedman and Phillips. They have discussed the role of price expectations, right, in causing the shift in the Phillips curve, right? So first of all, we will discuss these two reasons separately. हम इन दोनों factors को separately study करेंगे. First of all, we will study the shift in the Phillips curve because of effect of cost of living on wages, how it leads to shift in the Phillips curve, and because of this shift in Phillips curve, new long run Phillips curve gets emerged. जो long run Phillips curve है वो different हो जाता है from the short run Phillips curve, right? So first of all, we will discuss the first explanation. हम first explanation discuss करेंगे, effect of cost of living on wages, and this results in the shifts in Phillips curve, right? Now let us suppose, just let me share my screen. Okay. Now let us take the example. देख लेते हैं Phillips curve का. Suppose this is the Phillips curve which is existing in the economy, right? ये A Phillips curve exist कर रहा है, right? And suppose this is the level of rate of unemployment U1, which is right now existing in the economy. Over here we take price inflation. यहाँ पे हम price inflation ले रहे हैं, right?
And suppose price in right now in this particular case, we are taking that price inflation is equal to wage inflation, and we are assuming that rate of productivity is zero. तुम्हें याद होगा हमने किया था that price is equal to wage inflation minus rate of productivity. Suppose over here we are assuming that this rate of productivity is equal to zero, so price inflation is equal to wage inflation. दोनों एक दूसरे के equal है, right? Suppose the economy is right now, the economy is at point K, economy point, just a second, okay, economy is at point K, and OU1 is the rate of unemployment in the economy, with OP1 rate of inflation in the economy, which is equal to rate of wage inflation, right? Now suppose that policymakers think that this rate of unemployment is high for the economy, and they goes for an expansionary public policy in order to reduce this rate of unemployment, right? Now, as per and they assume that AA Phillips curve is which shows the relationship between rate of unemployment and price inflation exists in the economy, right? Now, with the help of the expansionary policy, suppose they want to reduce the level of unemployment from U1 to U2, यहाँ तक कि reduce करना चाहते हैं, and they follow the expansionary policy. By reducing the rate of unemployment from U1 to U2, demand for labor will increase. Because of that, wage inflation will increase. जो wages हैं वो increase होंगी, and due to that, prices will increase. Prices will also increase, and the inflation will increase from K. This combination of rate of unemployment and inflation will shift from K point to R point. ये K point से R point पे shift हो जाएगा, and inflation will increase from P1 to P2. जो inflation है वो P1 से P2 हो जाएगी, right? Now, because this unemployment has reduced, because the money wages has increased, money wages increase हुई थी. Due to increase in the money wages, unemployment has reduced from U1 to U2. Unemployment reduce हुआ because there was increase in demand for labor, right? But simultaneously, price will has also increased from P1 to P2. जो price is, so first of all, what has happened due to the expansionary policy? First effect क्या आया? Because of this policy, first effect हम लेते हैं. Because of this expansionary policy, there was effect on aggregate demand. Because of that, there is reduction in the unemployment rate, and this has the effect of causing wages to rise, in turn through which there is effect in the cost of production, and prices has also rise. That means, because first effect is that because of increase in wages, there is increase in prices. Prices increase हुए. That means wages भी W1 से W2 हुई, prices भी P1 से P2 हुए. Because of that, the economy has shift from point K to point R. This is short run effect. ये short run effect है, short run effect of change in unemployment rate on wages and then on prices. आपने unemployment rate reduce किया, उसका impact wage increase पे आया, and wage increase has impacted the prices. Prices को impact किया, and prices has increased. Because of this, there was upward movement along the same Phillips curve. Same Phillips curve पे upward movement आया from K to R. So this is basically the short run effect. इसको हम short run effect कहेंगे. This is short run effect, right? But the increase in prices increase हो गए. The increase in prices, second effect क्या होगा? When prices has increased, this increase in prices will raise the cost of living, right? Cost of, because real wages जो हैं वो the labor has assumed that because of increase in money wages, their real wages has increased. Because of the increase in real wages, जो impact था वो इस तरीके का इकोनॉमी में आया. But later on, price has also increased. Because of increase in prices, the cost of living has reduced. जो cost of living था, that has increased. So because of increase in prices, cost of living will increase.
So due to increase in the cost of living, the laborers will put the pressure on the management to increase their wages, and due to this money wages will further increase. जो money wages हैं वो further increase होंगी, and due to increase in money wages further there will be impact on prices. Prices भी और ज़्यादा increase होंगे. That means wages has increased from W1 to W2. Price has also increased from P1 to P2. Due to increase in the price from P1 to P2, there is increase in the cost of living. Cost of living increase हो गया. Because of this, there will be pressure to increase the money wages. Money wages और ज़्यादा further increase होंगी, and this will suppose due to increase in the prices from P1 to P2, जो मनी वेजेस हैं they will increased to W3. वो W3 पे increase हो जाएंगी. So because this is the long run effect of change in prices on wages. So this is short run effect and this is long run effect. And this second effect, ये जो second effect है, this will lead to shift in the Phillips curve. ये Phillips curve में shift लेकर आएगा. That means now wages has increased from W2 to W3. Due to this, prices will also increase from P2 to P3. Suppose prices भी जो है वो P2 से P3 पे increase, because wages has increased, further prices will also increase. So rather than be on the point R with U2 rate of unemployment, economy will be on point S. जो economy है वो पॉइंट एस पे है. एंड हाँ जी मैम, जब मनी वेजेस फर्दर इंक्रीज होगी तो प्राइस के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी तो कम होगी. प्राइस के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, मतलब प्राइस तो इंक्रीज होंगे P2 से P3, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जब मनी वेजेस बढ़ रही है, W3 हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी तो रिड्यूस होगी. अब जब मनी वेजेस बढ़ रही है तो दिस विल पुट द प्रेशर ऑन द एंटरप्रेन्योर्स और फर्म्स और एंटरप्रेन्योर्स पे वो उसको प्रेशर डालेगा, राइट. And due to that their cost of production will increase. When their cost of production will increase, they will further increase the prices. उस cost of production को cover up करने के लिए वो further prices को increase कर देंगे, right. What are you saying कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, कम होगा. मैं कह रही हूँ मतलब हायर मनी वेज जब होगा, जब W3 मनी वेज हो जाएगा तो ज्यादा लोग अपने मतलब लेबर सप्लाई करेंगे, तो तब इंक्रीज नहीं होगी, मतलब डिक्रीज नहीं होगी अनएम्प्लॉयमेंट. एक्चुअली जो रेट ऑफ जो वेदर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड और इट वोंट बी क्रिएटेड, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर लेबर. ये डिमांड फॉर लेबर पे डिपेंड करता है, राइट. नाउ बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशनरी पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी ले रही है. बिकॉज ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी because people will be having more money. Yes, ma'am. Because of the aggregate demand, it will be profitable to produce more. Yes, ma'am. When producer want to produce more, they will start demanding more labor. Yes, ma'am. When the demand for labor will increase, wages will increase. Yes, ma'am. When wages will increase, then supply of labor will increase. Yes, ma'am. Right. So first it is change in the demand for labor, which is bringing wages in the upward direction. सप्लाई तो कितनी भी हो लेबर की, लेकिन जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, जब तक जॉब क्रिएशन नहीं होगा ना. So it is the demand for labor which is creating jobs. Okay, ma'am. Right. So due to this, what will happen? जो हमारी there is increase in wages. Due to increase in wages, there is expansionary policy work कैसे कर रही है वो अगर तुम पूरा का पूरा process देखो, then this is how it is working, expansionary policy. So ultimately effect कहाँ पे आया with all this? What is happening due to expansionary policy? There is change in the labor market. Labor market में change आया कि demand for labor has increased. Because of increase in demand for labor, money wages will increase. Due to increase in money wages, prices will further increase. Cost of production increase होगा तो prices भी increase होंगे. Due to increase in prices, cost of living will increase क्योंकि उसका impact फिर जो है वो labor पे आएगा. Their cost of living will increase. When their cost of living has increased,
then money wages will further increase. जो money wages हैं वो further increase होंगी, right? So ultimately क्या हुआ, expansionary policy की वजह से unemployment has reduced from OU1 to OU2, but finally कहाँ settle down हुआ inflation, rather than by settling down on OP2 with this combination, inflation has settled down on OP3. जो inflation है वो OP3 पे settle down हुआ. Is that clear? Excuse me मैम, हाँ मैम जी. जब इंक्रीज हो रहा था मैम मनी वेजेस, उसमें प्राइस लेवल में इंक्रीज हो रहा था और वेजेस में भी इंक्रीज हो रहा था मैम. अगर जो वेजेस में इंक्रीज है वो ऑलरेडी ज्यादा हो प्राइस लेवल से, तो भी डिमांड जो लेबर है वो डिमांड करेगी कि उनकी मनी वेजेस को स्टिल इंक्रीज किया जाना चाहिए. अगर मनी वेजेस में इंक्रीज ज्यादा है प्राइसेस से, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो OU1 से OU2 आया है वो वापस अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मनी वेजेस इफ दे आर हायर देन दी प्राइसेस, then that means pressure on the entrepreneur to pay higher wages is higher, उनकी cost of production higher है, but they are receiving lesser in the form of a prices. So due to this what happen, inflation तो increase होगा ही होगा, because labor has जब labor ने assume किया था कि उनका real wages उनकी wages कितनी बढ़ गई हैं, so that was according to the what is the price level in the economy and how much money has increased, money wages has increased. तो उसको कंपेयर करके उन्होंने अपना जो सप्लाई था वो प्रोवाइड किया था, राइट? लेकिन लेटर ऑन दे विल रियलाइज कि प्राइसेस हैज आल्सो इंक्रीज, जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं, तो उन प्राइसेस को मैच अप करने के लिए दे विल स्टार्ट डिमांडिंग हायर वेजेस. बट अगर मनी वेजेस प्राइसेस से हायर हैं, then that means cost of production will be higher. और अगर cost of production higher जाती है, then unemployment यहाँ U1 से U2 कम होने की बजाय unemployment बढ़ जाएगी, because due to higher cost of production, due to higher real wages, demand for labor is inversely related with real wages. क्योंकि real wages higher हो गई हैं, demand for labor will shrink. जो demand for labor है वो shrink हो जाएगी, right? Okay ma'am. So due to that, we will be on the same level of unemployment with the higher inflation. Yes ma'am. Right? वो हम फ्रीडमैन में करेंगे. वो इम्पैक्ट जो है वो फ्रीडमैन फिलिप्स ने दिया है, जहां पे वो कहते हैं कि it is not the money wages, demand for labor and supply of labor works according to the real wages. वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम जो पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ लिविंग, इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन ऑफ लिविंग और इफेक्ट ऑफ प्राइसेस ऑन वेजेस कर रहे हैं. जब हम फ्रीडमैन और फिलिप्स का पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे तो वहां पे ये रियल वेजेस, एक्सपेक्टेशंस, वहां पे ये सारे पॉइंट्स आएंगे जो अभी हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे. ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि वेजेस का इम्पैक्ट प्राइस पे आया, लेकिन प्राइस का इम्पैक्ट वेजेस पे आता है, फर्दर वेजेस का इम्पैक्ट जो है वो प्राइस पे आता है. सो इसको हम बेसिकली कहते हैं देयर इज वेज प्राइस स्पाइरल. ये वेज प्राइस स्पाइरल की तरह है, one impacts the other impacts the first one. So this type of a circle keeps on working, and because of this type of a circle जो हमारा curve है, that means now the Phillips curve is on S point. जो हमारा Phillips curve है वो हमारा S point पे है, right? That means it has been assumed that the unemployment will reduce from U1 to U2, and in order to reduce this unemployment, the economy will move from point K to point R. This will happen in the short run, but in the long run, that means जो impact price का wage पे आता है, ये थोड़ी it takes a little bit lag period. ये lag period के बाद आता है, because this type of realization that prices has increased and it has increase the cost of living, this takes a little bit duration to the labor to understand this change, and then they will further start demanding higher wages demand karenge. Because of that, further prices will increase. When the wages will increase to W3, further price, due to this, prices will increase to P3, inflation will increase to P3. So that means in the long run, in the short term, economy will move from K to R, and in the long run, due to this expansionary policy, economy will move from R to S. जो economy है
वो R से S पे मूव कर जाएगी, राइट. सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट विल कम, इस तरीके का इफेक्ट आएगा. तो ड्यू टू दिस type of unidirectional relationship between wages and prices. Wages affect the prices, but further prices also affect the wages. Due to this second relationship, there is shift in the Phillips curve. जो Phillips curve है उसमें shift आता है. Due to first relationship, there is movement along the Phillips curve. Same ही Phillips curve पे हम K से R पे चले गए. But due to second type of a relationship where price impacts the money wages, जहाँ prices money wages को impact करते हैं, we shift from R to S. जो इकोनॉमी है वो R से S पे शिफ्ट हो रही है. So if we join these 2 points, अगर हम इन 2 points को join करें, point S, मेरा हाथ बहुत ज्यादा हिल रहा है, and point K, you will get this type of a line. एक हमारे पास ये line आएगी. So this line is basically known as long run. इस line को हम long run Phillips curve कह रहे हैं, right? So this long run Phillips curve is basically joining point K and point F, which will exist in the long run, जो long run में exist करेंगे. So we have seen that the impact of this expansionary policy is not as it has been predicted. It has been predicted that the economy will move from K to R, but actually in the long run economy has moved from point K to point S. जो economy है वो point K से point S पे move की है. So with the U2 there is higher inflation exist कर रही है. And if the policy maker wants to keep the inflation at P2 also, which they have assumed, उन्होंने assumed किया था कि inflation will only exist at OP2 level, then they have to sacrifice the rate of employment. We can see अगर हम P2 पे ही रहना चाहते, because P3 is the extra rate of inflation which they have not predicted, and it has increased from P2 to P3. P2 से P3 हो गया, but they were predicting according to the stable Phillips curve, there was a prediction that inflation will increase from OP1 to OP2. So if they want to keep this P2 rate of inflation, then we can see that the rate of unemployment with the expansionary policy will not reduced by U1, U2, but it will be only reduced by U1 to U3. Is that clear? मैम हमने ये LL लाइन क्यों ड्रॉ की है बीच में इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके? इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया कि if I want to reduce the U1 मेरा पहले ओरिजिनल इनिशियल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था. इस U1 पे K पॉइंट पे इकोनॉमी थी और P1 पे इन्फ्लेशन था. जब इकोनॉमी ने रिड्यूस किया रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम U1 टू U2, तो U1 से U2 पे जो इन्फ्लेशन था लॉन्ग रन में वो S पॉइंट पे आया. Yes, ma'am. Right? So if I join S and K point, that means in the long run, with U1 rate of unemployment, inflation is P1, and with rate of unemployment as on U2, अगर U2 rate of unemployment है, तो rate of inflation is P3. मैम that means ये P2 को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब हमें हमारा जो नया वाला P2 will happen exist in the short duration. ये short run में होगा, but long run में there will be shift. Phillips curve will shift in the upward direction and R point will shift to the S point. जो R point है वो S point पे shift हो जाएगा because of the impact of increase in prices. क्योंकि prices P2 हो गए थे, तो impact of these prices will come on increase in wages increase होंगी, and because of this increase in wages further there will be increase in prices to P3 level. मैम दैट मींस ये दोनों सेम ही है ना, जो हमने LL बनाया और जो न्यू वाला हमने फिलिप्स कर्व बनाया था लॉन्ग रन वाला, वो दोनों सेम ही है. ये this is not, these both are short run, ये दोनों ही short run में है, लेकिन अगर आप U2 के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो BB पे ऑपरेशन हो रहा है.
बीबी इफेक्टिव है। और अगर आप U1 पे हो तो AA पे आप एग्जिस्ट कर रहे थे, K कॉम्बिनेशन था। लेकिन अगर आप U2 रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हो तो AA फिलिप्स कर्व शिफ्ट शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करेगा, आप K से R पे पहुंच गए, लेकिन लॉन्ग रन में आप R से S पे पहुंच गए। दैट मीन्स आपका जो फिलिप्स कर्व है वो AA की जगह BB पे पहुंच गया। अब आप अगर इससे भी ज्यादा U2 से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप रिड्यूस करते हो तो इस फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग बीबी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं आएगा। इन दी लॉन्ग रन there will be further shift in the Phillips curve from BB to CC, and the changes will be according to this CC Phillips curve rather than B Phillips curve. शॉर्ट रन में तो ये A Phillips curve वर्क करेगा। अगर आप इकोनॉमी में अगर A Phillips curve एग्जिस्ट कर रहा है right now and the changes in the economy are according to the A Phillips curve, but this movement from K to R will happen in the short duration only. In the long run this A Phillips curve will shift to the B Phillips curve। जैसे हमारे डिमांड कर्व अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, this A curve will shift in the upward direction and it will be on the position of B curve। वो B curve की पोजीशन पे आ जाएगा। तो लॉन्ग रन में जो चेंजेस हैं, अगर हम ये K और S का ही एग्जांपल ले, लॉन्ग रन में earlier we were on point K, but in the long run we will be on point S। we will shift from point R to point S। short run में हम point R पे ही थे, सेम ही फिलिप्स कर्व पे थे, but long run में because of this type of a action we will shift from point R to point S, and point S is existing on a higher short run Phillips curve। हम कहते हैं ना कि हम शॉर्ट रन कर्व्स को ड्राइव करके हम लॉन्ग रन कर्व ड्राइव कर लेते हैं, शॉर्ट रन कर्व्स के पॉइंट्स को ज्वाइन करके। यस मैम। तो यहाँ पे भी हम डिफरेंट शॉर्ट रन कर्व्स के पॉइंट्स को ज्वाइन करके वी आर ड्राइविंग द लॉन्ग रन कर्व, कि लॉन्ग रन में देयर विल बी शिफ्ट इन द फिलिप्स कर्व। शॉर्ट ड्यूरेशन में चेंजेस विल बी अकॉर्डिंग टू ए फिलिप्स कर्व, बट इन द लॉन्ग रन द इकोनॉमी विल शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी, because B curve is showing that if the rate of unemployment is U2, prices will be P3। A curve तो शो कर रहा था U2 अगर आपका rate of unemployment है तो prices will be P2। that is true for the short run, but in the long duration we have seen that if the unemployment is rate of unemployment is OU2, we are not on point R in the long run, but we are on point S, because the rate of inflation has increased to OP3। OP3 में चला increase हो गया है। This shows that in the long run the Phillips curve has shifted from A position to B position। मैम U3 कैसे आया? कौन सा? U3 है, now it has been seen that inflation has increased from OP2 to OP3। हम OP2 चाह रहे थे लेकिन inflation कहाँ आ गई? OP3 पे। But if you want to keep the inflation at OP2 only, क्योंकि planning OP2 के according थी। ओके, तो मतलब अगर हम लॉन्ग रन कर्व के हिसाब से देखेंगे तो वो U2 आएगा। अगर हम if we want to reduce the rate of unemployment from U1 to U2 in the long run, then inflation will be OP3। is that clear? Yes ma'am। Right, but if in the long run if we want to keep the level of prices at OP2 level, अब दो choices है ना, या तो आप rate of unemployment को कम कर लो और P2 P3 extra inflationary pressure ले लो long run। this is one choice। Yes ma'am। Second choice is that we cannot afford to go beyond P2 because it will put more inflationary pressure on the economy। Yes right? ma'am। So उसकी वजह से क्या होगा, जो आपने प्लान किया था कि आपका U1 से U2 और rate of unemployment reduce हो जाएगा because of the expansionary policy, but you want to keep the rate of inflation at P2 level only। तो अगर आपने P2 लेवल पे ही रखना है लॉन्ग रन में, तो अब हमारा लॉन्ग रन कर्व कौन सा है? LL इज आवर लॉन्ग रन कर्व, ये जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने लिया था। यस मैम। राइट, देन वी कैन सी, अगर इसी लॉन्ग रन कर्व पे जाऊं मैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, सपोज दिस इज पॉइंट T, then we have to basically give up the rate of reduction in the rate of unemployment।
rate of unemployment will not reduce from U1 to U2, but it will be only reduced from U1 to U3, क्योंकि हमें P3 इन्फ्लेशन नहीं चाहिए. Yes, ma'am. Is that clear? So long run पे हमारे यहाँ पे 3 points बन गए, K, T and S. S is if we want that rate of unemployment in the long run should reduce from U1 to U2, then we are ready to take P3 inflation. But P3 inflation is higher for the economy. It is more, it puts more cost on the economy. It gives more harmful effect to the economy. So we want to keep the level of inflation at P2 only. Then to keep the rate of inflation at P2, we have to sacrifice the level of employment. हमें level of employment sacrifice करना पड़ेगा. So due to that, rather than the reduction in the rate of unemployment from U1 to U2, the rate of unemployment will only reduce from U1 to U3. मैम ये U1 से U3 पे इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कुछ लोग विलिंग हो जाएंगे लॉन्ग रन में उसी वेजेस पे काम करने के लिए. अब यस, यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट? दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस, ये हमारा, तुम देखोगे ये जो मैंने फर्स्ट कर्व बनाया है लॉन्ग रन का, अगर मैं यहाँ पे क्लियर ले लूं तो ये स्लांटिंग है. इस तरीके से स्लांटिंग मीन्स दैट सपोज ये मेरा U1 पॉइंट था, राइट? शॉर्ट रन में मैं सपोज यहाँ पे अब मैं शॉर्ट रन यहाँ कर्व नहीं बना रही हूँ. शॉर्ट रन में मैंने कहा था कि ये U3 हो जाए, right? And for that, suppose this is the point which is existing on the Phillips curve, we were ready to take the inflation OP2, right? But OP2 ही inflation हम रखना चाहते हैं, but actually long run में क्या हुआ, rather ये K point था, ये R point था, now this is T point. अगर हम rate of inflation, actually unemployment U3 ही रखना चाहते हैं, तो इकोनॉमी का जो rate of inflation है वो P3 पे आ गया. I'm just making it along with the this curve, long run curve के according बना रही हूँ. So point S है. But rather than going for P3 inflation, which is very high, we want to keep the inflation at P2 only. So long run में हम R से T point पे shift हो जाएंगे. So there can be two types of a shifting. R से S, if we actually want to keep the rate of unemployment at U3 level, then we have to take the inflation OP3. तो cost हमारी high है inflation की form में, then the shifting will be like this. Shifting upward direction में आ जाएगी. Second option is rate of inflation को P2 पे ले आओ. अगर rate of inflation को हम P2 पे लाएंगे तो actually क्या हुआ, आपने money wages नहीं बढ़ाई उतनी जितनी ये W3 पे डिमांड आ रही थी. You have not increased money wages to W3 level, due to which जो हमारा rate of employment है, rate of unemployment है, that has increased from U1 to U2 only. वो U1 से U2 पे ही आ गया. Is that clear? Yes, ma'am. Right? So due to this type of, that means there are two options. Either move in this direction अगर आपको rate of inflation controlled रखना है, और either move in this direction या आप इस direction में move करो. आप अब तुम कह रहे हो कि ये unemployment क्यों कम हुआ, ये इसीलिए कम हुआ कि P2 का impact तो wages पे आया, जिसकी वजह से wages W3 हो गई. लेकिन you are not allowing the prices to increase from P2 to P3. आप अगर P2 से P3 inflation नहीं चाहते हो, then because of this what happened, many producers will producers जो बहुत सारे जो producers हैं, they will not be ready to hire labor on these higher wages. इन इतनी higher wages पे जो labor को hire नहीं, W3 wages हो गई है, many firms and producers will not be ready to hire the labor at these higher wages. Because of that, their demand for labor will reduce. जब उनका demand for labor will reduce होगा, then the rate of unemployment will increase from U3 to U2. So ये impact आया short run में कि आप U1 से U3 पे चले गए थे, but long run में again you have shifted from U3 to U2. Is that clear? Yes.
Yes, ma'am. Right? So this type of a change will come, and if we join this point, अगर हम इन S T K points को अगर हम join कर लें, then we will get the long run Phillips curve. हमारे पास long run Phillips curve आ जाएगा. मैम बट U3 के ऊपर तो जो प्राइस है वो OP3 है, बट U2 पे तो प्राइस OP2 है मैम. जैसे अगर उन्होंने डिमांड फॉर लेबर कम कर वो शॉर्ट रन में प्राइसेस कैसे हुए कम? That was on the short run only. जैसे अगर मैं यहाँ समझाऊं तुम्हें, this is demand for labor, this is supply of labor, and over here we take prices. ठीक है, और यहाँ हमने employment ले लिया. एक्सपेंशनरी पॉलिसी आई जिसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर जो है वो इंक्रीज हो गई. ठीक है, यस मैम. ये हमारा एम्प्लॉयमेंट था पहले N1 पे. रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मींस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई ON1 से ON2. राइट, अब जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड फॉर लेबर भी बढ़ी. डिमांड फॉर लेबर की वजह से वेजेस भी बढ़ी हैं. वेजेस बढ़ गई तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो भी इंक्रीज हो गई और डिमांड फॉर लेबर के इक्वल हो गई इस पॉइंट पे. ठीक है, यस मैम. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वेज बढ़ने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी प्रोड्यूसर्स ने P1 से P2 कर दिया. ठीक है, जब प्राइसेस P1 से P2 हो गए तो जो लेबर है they will start demanding, they will see कि उनकी जो परचेजिंग पावर है वेजेस की, जो वो सोच रहे थे कि बढ़ गई हैं, राइट, बट वो एक्चुअली रिड्यूस हो गई क्योंकि प्राइस भी P1 से P2 हो गया. यस मैम, वो सेम ही रह गई जो पहले थी. राइट, यस, ठीक. वो दैट मींस इट इज नॉट अकॉर्डिंग व्हाट दे वर थिंकिंग कि सिर्फ मनी, उनकी मनी वेजेस बढ़ गई. तो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, देन दे विल रियलाइज कि उनकी रियल वेजेस बढ़ी नहीं है. देन द सप्लाई ऑफ लेबर कर्व विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन. सप्लाई ऑफ लेबर यहाँ शिफ्ट हो गया. ठीक है, यस मैम. उन्होंने सप्लाई ऑफ लेबर ये जो बढ़ा था, दिस वाज due to change in their wages, but prices has also increased. Because of that they will start demanding more wages, and they on this their supply of labor will shift in the upward direction में shift हो जाएगा. Now this new equilibrium point is this is the new equilibrium point. Demand for labor, this was D0, this was S0. Now this is DL1. Due to DL1 there is increase in prices increase हुए हैं तो जो real wages हैं वो fall कर गई. real wages जब fall कर गई, then due to this the supply of labor curve will shift in the upward direction. supply of labor curve भी upward direction में shift होगा, because they will start pressurizing management की new contracts sign करो जिसमें higher wages fix करो, and supply of labor will shift in the upward direction. जब supply of labor shift हो गया upward direction में, then equilibrium point will, पहले short run में यहाँ था E1 पे, ये था. शॉर्ट रन में चेंज आया, ये E2 पे आया, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर कर्व भी ऐसे शिफ्ट हो जाएगा तो ये E3 हो गया. सो अल्टीमेटली तुम देखोगे प्राइसेस हो गए P3 और रेट, देन रेट ऑफ जो आपका रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट था वो आपका वापस रिड्यूस होके यहाँ पे आ गया, N1 पे आ गया. Yes, right? So these all changes are happening in the labor market, but we are showing it on the Phillips curve. ये labor market में changes हो रहे हैं और इन changes का तो actually inflation और rate of unemployment, इन ये दोनों कैसे link हो रहे हैं? In between all these changes are happening, and impact of these change happenings we are representing through the Phillips curve. हम Phillips curve के through इसे represent कर रहे हैं. Right? बट मैम पॉलिसी मेकर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि उन्हें P2 पे रहना है या P3 पे? वो पॉलिसी अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी की वजह से P3 हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जा रहा है, P3 रेट ऑफ इन्फ्लेशन जा रहा है, देन इन दैट केस दे विल एक्सपेंशनरी पॉलिसी को वो थोड़ा फिर कॉन्ट्रैक्शनरी में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे. राइट, this is will be done by the policy maker. And in the labor market में तुम अगर चेंज हमारा, अगर लेबर मार्केट की वजह से चेंजेस की वजह से क्या हुआ, हम N1 पे आ गए और इन्फ्लेशन P3 पे आ गई, बट यू आर सेइंग कि P2 पे कैसे आ
from U2 to U3, right? Yes, ma'am. So this type of a change will come, ये change आएगा, right? So if we join this point, we will get the long run Phillips curve. हमारे पास long run Phillips curve आ जाएगा. अब long run Phillips curve भी हमारा दो तरीके का होता है. If the effect of price inflation on wages is less than equiproportionate, equiproportionate नहीं है, तो जो हमारा कर्व है इस तरीके से slanting बनता है, right? Slanting means like for example, if there 1% increase in the cost of living leads to less than 1% increase in the rate of price inflation. That means अगर आपका जो if there is 1% increase in the prices, right, and due to that 1% increase in prices, suppose ये prices हमारे W2 से P2 हो गए और P2 की वजह से जो change आया है, wages इससे कम increase हो रही हैं. That means price ज़्यादा increase हुआ, but wages are increasing less than this. Then in that case, जो हमारा long run Phillips curve है, this is slanting, ये slanting बनता है. And if the effect is equiproportionate, अगर effect हमारा equiproportionate होता है, then in that case, suppose these are the Phillips curve, जो हमारा long run Phillips curve है, हमारा long run Phillips curve straight line बनता है. If the effect of prices on wages and effect on effect of prices on wages is equiproportionate, अगर equal effect आ रहा है तो long run Phillips curve straight line होता है. And if it is not equiproportionate, तो जो हमारा long run Phillips curve है वो इस तरीके से slanting होता है. अब equiproportionate का यहाँ पे example देखो, जितना हमारा demand increase हुआ था, exactly उतना हमारा supply decrease हो गया. So हम पहले भी N1 पे थे, हम दोबारा N1 पे आ गए, right? Yes, ma'am. But चलो ये मैं कल समझाती हूँ, अभी लंबा खींचेगा ये डिस्कशन. सो दैट मीन्स यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ कि अगर हमारा इम्पैक्ट प्राइस इन्फ्लेशन या कॉस्ट ऑफ लिविंग का इज नॉट इक्वी प्रोपोर्शनेट, अगर इक्वी प्रोपोर्शनेट नहीं है, इट हैज less than equiproportionate result or impact on wages, तो हमारा long run Phillips का थोड़ा सा slanting बनता है. Slanting means there is reduction in rate of unemployment but less than the requirement. Requirement से थी U1 से U3 पे U2 पे जाने की, but हम shift हुए U1 से U3 पे. Then we have a slanting long run Phillips का. But if the effect is equiproportionate, अगर हमारा इफेक्ट जो है वो इक्वी प्रोपोर्शनेट है, जितना प्राइस इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है एग्जैक्टली उतनी ही वेजेस को इंक्रीज, उतनी ही मनी वेजेस इंक्रीज हो रही हैं, देन इन दैट केस the long run Phillips curve is a straight line curve. That means we were on U1 rate of unemployment, then we will, like for example U1 थे, expansionary policy आई, U3 पे आ गए, right? Because of this impact of increase in prices on wages. So suppose we were on point K, we reached on point R. Because of the long run effect, we reached on point S, but point KS is exactly over and above the point K. So again, in the long run, we will reach to the same rate of unemployment. हम same rate of unemployment पे आ गए. So that means in this case long run Phillips curve will be a straight line curve. जो long run Phillips curve है वो straight line curve है. कल हम इसको, कल तो हमारा है नहीं, चलो फर्दर हम इसको जब भी, कल तो तुम्हारा वो है MST,